difference between a while loop and a for loop? When okay, this will what I'm about to say will get me crucified by Dr. Junaid and a few other people who teach programming. Lekin if you actually know how to learn, if you know how to create a while loop, you'll never be needing a for loop. Other than exam Right. questions, other than exam questions, you'll never be needing them. And if you know a for loop, you will never be needing a while loop. मेरी unfortunately training जो थी वो GW basic में थी, जिसके अंदर ट्रेनिंग क्या जब मैंने पहला कोड लिखा था, सो उस वक्त while loop होते ही नहीं थे, तो मैं हर चीज में for loop बनाता हूँ. लेकिन while is exactly loop essentially is just a block of code that's going to keep on repeating till a condition is met. वो while हो, for हो, do while हो, repeat until हो, it's the same damn thing. ठीक है, but don't quote me on this. जुनेद मुझे Okay, मारेगा. great. Perfect. Thank you. Okay. Now, okay, so what we're going to do now is one of the questions was जिसके अंदर मैं थोड़ा सा शायद confuse कर दिया था. Sorry, Taimur, you need to lower your hand. So now what we're going to do is we're going to get a positive number from the user, and we are going to print the table for that number. So अब मैं dutifully बच्चे को इसको एक मैंने integer कर दिया, इसका नाम रख लेते हैं number. ठीक है? Let's call it 0. And we say cout, please enter a number between 1 and 10. ठीक है, ये हमने कर दिया और हमने उसे कहा cn number. अब I'm going to sort of try to systematically do what we did haphazardly. Uh, else while, these are while loops. There is no else while loop in C++, none that I know of. For loops होते हैं, do while होते हैं, आदिल, लेकिन I don't know else while कोई होता है कि नहीं, शायद कोई होता हो, लेकिन while, do while and for loops I know, else while I don't know. Okay. Okay, I'll talk about this later because I've never heard of an else while loop. अच्छा, now हमने क्या किया, हमने यूजर से नंबर ले लिया, लेकिन अगर नंबर सही नहीं है तो अब मैंने एक इंटरेस्टिंग लूप बनाने लगा. आई वांट टू कीप आस्किंग द क्वेश्चन जब तक नंबर वो सही नहीं देता. तो वाइल की कंडीशन क्या होगी? What do I want to do? I want to keep asking for an input जब तक सही जवाब नहीं देता. ठीक है, this is what I want to do. How do I do this? Wait, While I is not equal to that specific yeah, number. I think फातिमा का क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है. वरना हम डू वाइल पे आएंगे, पहले वाइल कर लें, फिर फॉर करेंगे, फिर डू वाइल करेंगे. ठीक है, ओके. सो आई थिंक फातिमा का आंसर सही है. मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा नंबर ग्रेटर देन 1 हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो, और लेस देन और इक्वल टू 10 हो. सो अब ये कंडीशंस हैं, तो मैं क्या कहूंगा, keep on asking this question while answer is less than 1 or answer is greater than 10. So I want to keep asking the same question जब तक मेरा आंसर इस रेंज के दरमियान नहीं आता. अगर मेरा आंसर लेस देन 1 है तब भी, मेरा आंसर ग्रेटर देन 10 है तब भी. तो I will keep on asking this question again. Please enter a number between 1 and 10. सही, and I will say cn so अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि this loop will keep on running जब तक या ये कंडीशन ट्रू है या ये कंडीशन ट्रू है. अगर नंबर नेगेटिव है तब भी इस लूप में आएगा, अगर नंबर 10 से ऊपर है तब भी इधर ही आएगा. इट विल कीप आस्किंग गिव मी द राइट नंबर, गिव मी द राइट नंबर. सो इसको हम कोड को चला के देखते हैं ये क्या करेगा. ये कोड एग्जैक्टली वो है जो कि इनपुट, सॉरी, आंसर वाज नॉट डिक्लेयर्ड, आंसर नहीं था, नंबर था. वेरिएबल
तो गलत इस्तेमाल किए. Okay, so now I run this code and I say -1. It'll say please enter a number between. So अब मैं कहता हूँ 15. It'll say keep and enter a number between 1 and 10. I say 25. It'll keep on asking me, and when I say 9 या 8, it'll say okay, I'm done. So now I have a way of validating the input जो कि मेरे पास पहले नहीं था. This is a new way of doing it क्योंकि ये मैं while loops के साथ कर रहा हूँ. So this loop will keep on running जब तक सही जवाब नहीं देगा. And actually I can see अब कितने गलत जवाब होंगे. So सबसे पहले मैं if I want to keep track of how many wrong answers he has given, so the way to do this is कि मैं कह दूंगा int counter is equal to 0, 1 कर देते हैं क्योंकि पहला. And जितनी दफा वो गलत जवाब दे मैं कहूंगा counter plus plus, and now it will only come to line 29 या 30 when the answer is correct. I can say thank you for your splendid choice after X number of tries. So this is now keeping a track of all my tries. When I say -1, उसने कह दिया, उसने मेरा काउंटर 1 कर दिया. अब मुझे पता है मैंने गलत एक दफा गलत जवाब दे दिया. मैं 11 कर देता हूँ, फिर गलत जवाब है. जब मैं 9 कहूंगा तो वो मुझे कहेगा थैंक यू फॉर योर आंसर आफ्टर 3 tries. So now I have a way of doing two things. I'm taking input, I'm printing it to the screen, I'm using while loops, and I have जो मैंने while loop की condition दी थी, this is now a compound condition in the sense कि या number less than 1 है या greater than 10 है. It will keep on asking me. So जब भी आप कोड लिख रहे होंगे ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना, अगर आप इनपुट लेते हैं किसी यूजर से, you could use something very similar to this. कि जब तक सही जवाब नहीं देगा तब तक ये इसी लूप में फंसा रहेगा. जब आप सही जवाब देंगे only then will it get to line 30. So this is a standard template, I suppose. It will keep on asking this question. It will keep on asking for number जब तक आप 1 और 10 के दरमियान नहीं देंगे. जब 1 और 10 के दरमियान का नंबर होगा तो then neither this is true nor this is true. क्योंकि this और that है ना, या वो सही है या वो सही है या दोनों सही हैं. दोनों सूरतों में सिर्फ ये लाइन 30 पे तब आएगा जब वो ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स होगी. इसका मतलब है कि दोनों नंबर इज बिटवीन 1 and 10 and only then will it come to line 30. And now I can do whatever I want to do with it. जी हसन, क्वेश्चन. मेरा एक वही क्वेश्चन था कि जिस तरह अगर एक दफा गलत हो गया फिर आपने नंबर सही कर दिया तो काउंटर 0 होगा या 1 होगा उसमें? क्योंकि फिर अगर सीएम में अपन 1 क्योंकि होगा. मैंने काउंटर को इनिशियलाइज किया था 1 से, याद है? वो पहली ट्राई पे 1 होगा. सो ये पहला इनपुट तो हमने लेना ही था, राइट? सो इसको रन करके देखते हैं. अगर मैं पहली दफा बता देता हूं तो लेट्स से मैं 2 करता हूं तो वो कहेगा थैंक यू फॉर योर स्प्लेंडेड चॉइस आफ्टर 1 ट्राई. एक्चुअली ट्राई होना चाहिए लेकिन ट्राइज, क्योंकि मैंने पहली दफा उसको 1 किया. लेकिन एवरी रॉन्ग आंसर, why would it come to line 24? It will only come to line 24 if this answer was wrong. Therefore every time I'm going to keep on increasing it. इस तरह एक बार गलत के ऊपर दूसरी बार सही किया तो फिर भी काउंटर ऐड होगा 1 से. ये हो गया ना? नहीं, काउंटर ऐड हुआ था, लेकिन जब मैंने ये देखो पहली दफा मैंने गलत आंसर दिया -1, ठीक है? इस वक्त मेरे काउंटर की वैल्यू है 1. लेकिन जब इस लूप में जाएगा, जब मुझसे दोबारा इनपुट मांगेगा, अब काउंटर की वैल्यू जो है ना, जब मैं एंटर करूंगा तो काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि वो लूप एक दफा चला है ना. ठीक हो गया. वो वाइल नंबर एक दफा नंबर इनपुट हो गया फिर दोबारा नंबर इनपुट हो रहा है. यस, अब ये दोबारा नंबर इनपुट हो रहा है, लेकिन इस दफा लाइन 25 वाला इनपुट हो रहा है. जब 25 पे इनपुट होगा तो 26 पे वो काउंटर को 1 कर देगा, 1 प्लस प्लस कर देगा. अच्छा, नहीं तो जब हम लोगों ने पहले एक दफा किया था तो 18 से हुआ था इनपुट और फिर सीधा वो फिर वाइल लूप में चला गया. हाँ, फिर प्रिंट हो गया फिर दोबारा मांग रहे तो फिर काउंटर कैसे? फिर काउंटर बाद पहले नहीं होना चाहिए. नहीं ये देखो कि काउंटर ये है. काउंटर मैंने 1 से शुरू किया था. जब पहली बार उसने लाइन 18 से इनपुट लिया था तो काउंटर की वैल्यू 1 थी, ठीक? अगर मैंने गलत इनपुट दिया तो फिर वो लाइन 24 पे आएगा, काउंटर की वैल्यू अभी भी 1 नहीं है. फिर वो मुझसे नंबर लेगा, काउंटर की वैल्यू अभी भी 1 है. ये इस वक्त काउंटर की वैल्यू 1 है, ठीक? लेकिन जब मैं ये एंटर कर दूंगा उस वक्त काउंटर की वैल्यू 2 हो जाएगी. सो इफ आई प्रिंट इट देन, सो लेट्स से मैं सही आंसर देता हूं
तो वो काउंटर की वैल्यू को लाइन 26 पे करेगा 2, फिर दोबारा वाइल लूप पे जाएगा, ये कंडीशन सही नहीं है, इट विल ब्रेक आउट, इट विल कम टू लाइन 29 and say thank you for responding choice, and at this point counter will be 2 and it will print. Actually this is not for the rest of the class, like, if you want you can actually set up a breakpoint here, like, how do you set up a breakpoint in this? There is a, yeah, so you can actually click here and it will create a breakpoint, and this breakpoint allows you to stop the program. So ये तुम खुद ही ट्राई कर लेना, मैं एक्चुअली क्लास के सामने फिलहाल ये नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रेक पॉइंट करके ना यू कैन स्टेप थ्रू द प्रोग्राम एंड यू कैन सी एवरी स्टेप, यू कैन सी कि हर स्टेज पे काउंटर की वैल्यू क्या है, एंड देन यू विल सी एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि पहली दफा काउंटर 1 होगा, लाइन 18 पे काउंटर 1 है, लेकिन वंस इट गेट्स टू लाइन 25 एंड 26 तब जाके काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करेगी जब वो दूसरी दफा इनपुट ले रहा होगा, ठीक है? Okay, so let's see what we want to do. अच्छा, हमने क्या करना था, हमने कोड क्या लिखना था, हमने ये कहा था कि मेरे पास वैलिड इनपुट आ गया है, और वैलिड इनपुट आने के बाद I want to print the multiplication table for this number. So why don't you guys take a minute? जी? Okay, so I want to print the multiplication number for this multiplication table for the number that I have taken. How do I write the multiplication table? This is something that we have talked about here. Okay, I want my loop counter. Okay, there's a bunch of questions. Let's see. Okay, Myra, was your question answered? I know I went on a tangent, but was the question answered by any chance, or do I need to repeat this? Okay, I'm assuming you got it. Otherwise, we'll. Acha, you have a query in the second one. In the second what? Can you please speak? Why is the counter increasing? Okay, ये counter को ignore करें. This was just इस counter को ignore कर देंगे, code से irrelevant है. सर आई वाज जस्ट क्यूरियस कि वो जो ट्राइस का जब वो कह रहा है कि अब 2 3 हो गया, पर जैसे कि हमने 3 दिया तो वो तो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं, क्योंकि दैट वो 1 से कम भी नहीं है और वो 10 से बड़ा भी नहीं है, तो फिर काउंटर कैसे खुद ही बढ़ रहा है? क्योंकि काउंटर तो नहीं बढ़ रहा, ब्लॉक खुद ही नहीं बढ़ रहा. अगर मैं नेगेटिव नंबर देता हूं या 10 से बड़ा नंबर देता हूं, ओनली 10 विल काउंटर इंक्रीज, क्योंकि वो उस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही तब. अगर मैं नेगेटिव नंबर देता हूं तो इट विल कम है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी. अगर नेगेटिव नंबर है तो इसका मतलब है इट विल कम टू लाइन 24. इफ द नंबर इज बिटवीन 1 and 10, it will not go within this block. It will go directly to line 29. It will only come here inside if the number is not between 1 and 10. इसका मतलब है कि अगर 1 से कम है या 10 से ज्यादा है, only then will this condition be true. Either this or that. So अगर मेरा input वाला number is less than 1 or greater than 10, which is not what I want a number between 1 and 10, जब बाहर होंगे तभी वो आके दोबारा मुझसे नंबर मांगेगा, और जब मुझसे नंबर मांगेगा तो फिर वो काउंटर प्लस प्लस करेगा. राइट, लेकिन अगर मैंने लाइन 27, यस, सो अगर मैं गलत नंबर दे रहा हूं तो लाइन 27 के बाद इट विल गो टू लाइन 22, जाके चेक करेगा कि जो नंबर एंटर हुआ है वो 1 and 10 के दरमियान है. अगर है तो इट विल से ओके, सही जवाब दे दिया है, लेट्स गो टू 29. लेकिन अगर सही जवाब नहीं दिया फिर वो लाइन 24 पे आएगा, दोबारा इनपुट मांगेगा, काउंटर प्लस प्लस करेगा, फिर दोबारा लाइन 22 पे जाके फिर चेक करेगा कि सही जवाब दिया है कि नहीं. अगर सही जवाब दिया है इट विल गो टू 29. अगर नहीं सही जवाब दिया
It'll go again, ask again, get the number, counter plus plus, and this. So this loop will keep on running जब तक नंबर between 1 and 10 नहीं आ जाएगा. अगर 1 से कम हो या 10 से ज्यादा हो, दोनों सूरतों में it'll go to line 24, 25, 26. लेकिन जब नंबर 1 और 10 के दरमियान होगा, then it will go to line 22 and then directly line 29, and that's how. So whenever the loop की condition is not met, and in this case number will be between 1 and 10, it will drop out. Okay. Now what do we want to do? For once I have the right number, what do I want to do with the number? I actually want to print the table for that number. Achha. I know how to write a loop that goes from 1 to 10. Okay. So how do I write a loop that goes from 1 to 10? I say int I is equal to 0 while I is less than 10. Okay. How do I write the table? So the way to do this is I say cout cout I, sorry, multiplied by number is equal to I times. Okay. And now inside the loop, I need to increment the counter. And this is my loop. अच्छा, ये line 35 पे उसी सूरत में आएगा code when the number is between 1 and 10. And when it comes here, it's going to initialize a value and it's going to say I is less. जब तक ये कब तक लूप चलाना है, जब तक I की वैल्यू 10 से कम है. तो essentially हर दफा I into number वो प्रिंट करेगा और उसका आंसर दे देगा 1 times 2, 2 times 2, 3 times 2, 4 times 2, blah blah blah, and हर दफा वो I plus plus करेगा. And now if we run this, we can actually see. So let's say I enter 4. So what I'm expecting is कि वो 4 का टेबल जो है उसको प्रिंट कर देगा स्क्रीन पे. And if you can see 0 times 4, 1 times 4, 2 times 4, 3 times 4, blah blah blah. लेकिन ये 9 तक गया है. मैंने 10 तक करना था. And that tells me कि ये मैंने जो condition लगाई थी ये गलत लगाई थी. ये less than or equal to होना चाहिए. Okay. I wanted to go from 0 to all the way up to 10, including 10. So when I run this and enter 4, it's going to give me the right answer. And this is a very simple use of loops. First, to get the right input, and secondly, to iterate and sort of print a whole bunch of numbers onto the screen. In this case, the table for whatever number that we have entered. And Isha, your answer is absolutely correct. Hassan, you're also right as well, absolutely. लेकिन वो equal to less than नहीं है, वो less than. अच्छा, by the way, ये हमने पहले बात की थी, briefly की थी, लेकिन less than or equal to is different from greater than or equal to less than. So equal to less than आप मैथ्स में लिखते हैं, लेकिन अगर आपने C++ में लिखना है तो वो less than ही equal to है. सिर्फ that's the syntax. So just remember that. So Hassan, your answer is correct, but just saying. ठीक है. Now we have done some basic loops and we have done some basic calculation using loops. What you need now is a whole lot of practice. मैं अभी for loops को भी skip करूंगा, मैं for loop की बात नहीं करूंगा. How do you find a prime number? So let's talk about slightly more complicated stuff. We want to write an algorithm to tell if a number is prime or not. What are the properties of a prime number? Let's say we have a number that's less than 10. ये हमारा ऊपर वाला part जो है ये वही है. Please enter a number between 1 and 10. Yes, Isha, you're right. So essentially हम ये कह रहे हैं कि tell if the number is prime. So what would be the pseudocode for finding out if a number is prime or not?
Can someone tell me? So ये भी ईशा ने जो लिखा है जी, हसन जी बताएं. So मैं सोचा था we'll divide it by every number. Let's say we have written 7, so we will divide it by every number between the number that we have entered in 1, and then we will check Absolutely. if dividing Okay. by that number again gives a remainder, तो फिर वो prime नहीं है. बिल्कुल. No, I think both the answers are correct. And essentially what we are saying is कि अगर आपको कोई बंदा नंबर एंटर करता है 7, so I'm going to divide it by all numbers between 1 and 7, excluding 1 क्योंकि 1 से तो सारे डिवाइड हो जाते हैं. So excluding 1, we are going to divide it by all numbers from 2 to 7 and see कि किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर 0 आता है कि नहीं. डिविजिबल का, so prime number is a number that's only divisible by 1 and itself and nothing else. ठीक है, that's a prime number. So prime number is ठीक है, ये हमने एग्री कर लिया. सही. So what we are saying is कि let's iterate all numbers between 2 and number. ये नंबर हमने यूजर से इनपुट लिया. If the answer is, if the remainder, okay, if a number is completely divisible, if the remainder is 0 at any point, it's not a prime number. Okay? If ये बात समझ आ गई? So what we're saying is a prime number is only divisible by 1 and itself. So what we're going to do is we're going to iterate all numbers from 2 all the way to n and see कि इनमें से कोई नंबर भी इसको डिवाइड करता है कि नहीं कंप्लीटली. एंड बाय डिवाइड आई मीन कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं. रिमाइंडर का ऑपरेटर क्या है C++ में? रिमाइंडर का ऑपरेटर है C++ में ये, राइट? परसेंटेज One more साइन. question. जी. So why are we doing it between 2 and the number itself? Why are we not doing it between 2 and number -1? या वो एक्चुअली वो स्क्वायर रूट ऑफ n होता है, लेकिन मैंने इतनी मैथ्स में जाना नहीं चाहता था. एक्चुअली स्क्वायर रूट ऑफ n तक चेक करते हैं, लेकिन हम डंकी वर्क कर रहे हैं, राइट? वी आर डूइंग द, लेट्स अज्यूम वी डोंट नो मैथ्स. इफ वी नो मैथ्स, अभी बहुत सारे चैंपियन कह देंगे कि 1 3 5 7 तो मुझे वैसे ही पता है. तो चेक इफ द नंबर इज एक्चुअली, if the number is between 1 and 10, the easiest answer is this. Actually, if the number is between 1, if number, sorry, ये भी हो जाएगा. If number equal to 1 or number equal to 3 or number equal to 5 or number equal to 7, ठीक है? This is the easiest answer, right? And this should work, but it only works for if this is hard coded, right? So if I say 4, it's not going to say anything. Actually हम ये कर सकते हैं, else so this also works, लेकिन यहाँ हम खाली less than 10 assume कर रहे हैं. लेकिन we will sort of kind of generalize that. So if I say 4, it's going to say it's, oh, this is wrong. It's not a prime. Sorry, not prime. Yeah, so if I say 4, it's going to say not prime, and if I say 7, it's going to say prime, right? And this is the wrong way of doing it, because it's only going to work for numbers less than 10, because I can hard code them. This is called hard coding, by the way. If number is equal to 1 or number equal to 3 or 5 or 7, it's only going to work for less than 10 numbers. So let's not do this. Let's
come up with an algorithm. तो हमने algorithm क्या बनाया है? हमने algorithm ये बनाया है, एक second, there are questions. Oh, I don't know maths as well, so let's not sort of make it. Subhan, 10 मिनट रुक जाएं. I will do this prime का example. We will revisit this. Then we can't just shut it down right now. So this is the last example, but we need to finish this. Okay, so we'll obviously revisit this in the next class because this will get a bit hairy. So मैंने क्या किया है कि if the number is divisible by only one and itself, so we're going to iterate all numbers between 2 and number. मुझे iterate करना आता है. So I'm going to say integer. iterate किस तरह करते हैं? iterate हम करते हैं इस तरह, right? So I know integer iterate is equal to 2, क्योंकि मैंने 2 से लेके नंबर तक जाना है. While iterate is less than number, iterate plus plus. So I have this loop that goes from 2 all the way up to number. तो ये तो मेरे पास आ गया, ये वाला पार्ट मैंने कर लिया. Now, what do I need to check? If the remainder at any point is 0, that means that this number is not a prime. So what I'm saying is, if the number percent remainder iterate equal to 0, this isn't a prime because कोई मुझे एक नंबर मिल गया है जैसे ये डिवाइड होता है. ठीक. Now, when will this be printed? This will only be printed if you find a number that divides number completely. Okay, उसका कोई ना कोई. So if I run this program will. So let's say I say, yeah. What line is the error? Shush. Sorry about this. So हमने क्या किया है? हमने एक लूप बनाया है जो कि 2 से लेकर नंबर तक जाएगा. Okay, sorry about this. So now I'm going to give it a number 4. 4 is obviously not a prime. So what will happen is the loop will go from 2 all the way to 4, and it will divide everything. 4 by, first it will divide by 2, then 3, then 4, and it will say this is not a prime because उसको एक नंबर मिल गया है जो कि उसको डिवाइड करेगा, क्योंकि जब वो 2 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा और फौरन चीर देगा कि this is not a prime. Let's try something else. Let's try 5. So when I put 5, तो वो क्या शुरू करेगा? 2 से शुरू करेगा. 5 divided by 2, remainder is not 0. 5 divided by 3, remainder is not 0. 5 divided by 4, remainder is not 0. And 5 divided by 5, remainder is not 0. So it will not print, okay, it's not a prime, which I'm assuming means, okay, it is a prime. And now, all I need to check is, okay, if it's not a prime, it's going to break. Okay? Otherwise, I keep on saying, okay, it is a prime. And actually there is ये बात अभी तक समझ आ गई कि any questions up to this point? So iterate मैंने क्या किया है? हमारा algorithm क्या कहता है? हमारा algorithm ये कहता है कि I'm going to start off from a prime number is only divisible by 1 and itself. इसका मतलब है कि अगर मैं 2 से लेके n तक जाऊंगा तो किसी भी नंबर से वो डिवाइड नहीं होगा. ठीक है. So मैंने एक वेरिएबल बना लिया. Let's call it iterate, or let's call it I. ठीक है. अब मैं हर दफा अपने नंबर को, जो भी नंबर यूजर ने एंटर किया था, उसको I से डिवाइड करता हूं. जब मैं उसको I से डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब यह है कि the remainder will never be a 0, because if it's a prime number then you cannot find any such number जिससे वो completely डिवाइड करता हो कि वो रिमाइंडर 0 आ जाए. रिमाइंडर 0 उसी सूरत में होगा अगर वो उसका फैक्टर है. Right? No, this is not an infinite loop because देखो हम सिर्फ नंबर तक जा रहे हैं ना. हम 2 से शुरू होकर नंबर तक जाएंगे और हमारा नंबर 10 से कम है.
इसका मतलब है कि ये कंडीशन, दिस इज नॉट एन इनफिनिट लूप बिकॉज आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम 2 एंड गो ऑल द वे अप टू व्हाटएवर नंबर हैज बीन एंटर्ड, उससे बियॉन्ड ये जाएगा ही नहीं. सो दिस इज नॉट एन इनफिनिट लूप. हसन, ये बात समझ आ गई? Okay, so what's happening is this, if you find such a number, n dividing n by that number gives you a zero का remainder, the computer will say this is not a prime. So let's say मैं 6 enter करता हूँ. 6 क्या करेगा? 6 क्या हो गया इसको? मैं 6 एंटर करता हूं. अच्छा, उसको 2 से डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड होता है, वो कहेगा दिस इज नॉट अ प्राइम. फिर वो 3 से डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड होता है, वो कहेगा इट्स नॉट अ प्राइम. सो 2 दफा कहेगा इट्स नॉट अ प्राइम. 4 से डिवाइड करेगा नथिंग, 5 से डिवाइड करेगा नथिंग. सो 2 दफा कहेगा दिस इज नॉट अ प्राइम, दिस इज नॉट अ प्राइम, क्योंकि पहली दफा उसने 2 की दफा किया था, फिर उसने 3 की दफा कहा था दिस इज नॉट अ प्राइम. सो दोनों सूरतों में उसने कहा दिस इज नॉट अ प्राइम. नाउ इसमें अभी तक कोई क्वेश्चन है? ये बात किसको समझ नहीं आई है? I'm not going to go beyond this example for prime right now. अच्छा, री-एक्सप्लेन करता हूं. अगर you've understood this, you can leave. क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि in order to find if a number is prime or not, I'm going to try all numbers less than. So let's say I want to find out if n is prime. What I'm going to do is I'm going to try all numbers from 2 all the way up to n to see कि इनमें से कोई नंबर इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है कि नहीं. पूरा डिवाइड करने का मतलब यह है कि रिमाइंडर इज 0. When you divide 10 by 5, the remainder is 0. But that means 10 is not a prime. So I'm going to check all numbers less than 10 to see कि कोई नंबर ऐसा है कि जब 10 को उस नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 है. क्योंकि अगर वो आंसर 0 है, इसका मतलब ये प्राइम नहीं है. एल्स नहीं, वजी हम एल्स में नहीं. अच्छा, 2 times this इसलिए प्राइम नहीं था हसन क्योंकि मैंने नंबर एंटर किया था 6. सो हमने 6 को 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, उसने कह दिया दिस इज नॉट अ प्राइम. फिर हमने i प्लस प्लस किया, फिर 6 को हमने 3 से डिवाइड किया, फिर भी रिमाइंडर 0 आ गया, उसने फिर कहा इट्स नॉट अ प्राइम. सो दैट्स व्हाई वी वर गेटिंग दिस इजंट अ प्राइम ट्वाइस, बिकॉज 2 पे भी पूरा डिवाइड होता है, 3 पे पूरा डिवाइड होता है. अगर तुम 6 के फैक्टर्स देखो तो 2 भी है और 3 भी है. तो 2 से भी डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, 3 से डिवाइड करो तब भी रिमाइंडर 0 आता है. इसलिए उसने 2 दफा प्रिंट किया दिस इज नॉट अ प्राइम. ठीक है. वजीद, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गलत है, लेकिन यूर ऑन द राइट ट्रैक. वजीद, हो ये रहा है कि अगर सो लेट्स से तुमने क्या किया, तुमने कहा सी आउट दिस इज अ प्राइम. सही, यही किया है ना. नाउ इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं 6 एंटर करता हूं तो पहले वो प्रिंट करेगा दिस इज नॉट अ प्राइम, फिर वो प्रिंट करेगा दिस इज नॉट अ. अच्छा, ये देखो, ये करते हैं, एक सेकंड, स्टॉप. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैं प्रिंट कर रहा हूं कि जिस नंबर से वो डिवाइड होता है, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ शो यू. सो नाउ लेट्स रन दिस. इफ आई रन दिस एंड एंटर 6, तो क्या करेगा? सबसे पहले वो कहेगा इट्स नॉट अ प्राइम बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 2. फिर वो कहेगा इट्स नॉट अ प्राइम बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 3, एंड देन इट्स गोइंग टू से इट्स अ प्राइम. पहली लाइन उसने कहा दिस इज नॉट अ प्राइम बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 2. देन ही सेड इट्स नॉट अ प्राइम बिकॉज इट्स डिविजिबल बाय 3. देन ही सेड इट्स अ प्राइम. सो ये थोड़ा सा कोड का लॉजिक गलत हो गया है, ये लॉजिकल मिस्टेक है, क्योंकि ये तो सही कह रहा है लेकिन ये आंसर, ये लाइन हर सूरत चल रही है. सो द वे टू एक्चुअली आंसर दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि मैं एक और वेरिएबल बनाता हूं, मैं इसको कहता हूं int flag is equal to 0. ठीक है. और if the number is completely divisible, rather than printing this, I simply say flag equal to 1. तो flag 1 कब होगा? flag 1 तब होगा जब you will find a number जो कि equally divide करता है. And end पे all I need to say is if flag equal to 0,
see out this is a prime. And this actually is, so अब होगा क्या जब ये प्रोग्राम एग्जैक्टली उसी तरह चलेगा, लेकिन एवरी टाइम इट सेज इट्स डिविजिबल बाय ऐसा नंबर, फ्लैग की वैल्यू वो 1 कर देगा। जब वो यहां आएगा, ये उसी सूरत में फ्लैग की वैल्यू 0 होगी इफ इट हैज नॉट फाउंड एनी नंबर जिसकी वैल्यू जो इसको इक्वली डिवाइड करता है। तो ये उसी सूरत में प्रिंट होगा। एंड नाउ इफ आई गिव इट नंबर 6, what will happen is it will say it's divisible by 3, it's divisible by 2, this is not a prime, and it will not say that this is a prime number now. So now my output is correct and I have actually declared a flag. तो मैंने एक flag variable बना दिया। This variable will only be set if it is not a prime. फिर मैं उसको चेक कर लूंगा और मेरे पास if else आ गया। So now I have a very convoluted way of trying to figure out if a number is prime or not. And it doesn't work, it works not just for numbers less than 10, it actually works for every number beyond this point. So I can check if 97 is a prime or 95. All I need to do is remove this check and this should actually work for any number. But what I suggest is ये थोड़ा सा convoluted हो गया. What I expect you guys right after I demonstrate this, I'm going to stop. And so now this is, I can give any number. So let's say I give the number 53. It will say it is a prime. But if I say 55, it should tell me it's divisible by 5, it's divisible by 11, and it should not. So this is 5 and 11, and this is not a prime. So I've just made a program that given any number, it tells me whether this number is prime or not. ठीक है। सो वो चेक किस तरह कर रहा है कि इट स्टार्ट्स ऑफ फ्रॉम 0 2 एंड गोज ऑल द वे अप टू n, हर नंबर से डिवाइड करके देखता है। अगर कहीं वैल्यू रिमाइंडर की 0 आ जाए तो वो क्या देता है, फ्लैग इज इक्वल टू 1, दिस इज नॉट अ प्राइम। फिर इस वैल्यू को वो याद रखता है, जब वो बाहर आता है इस पे तो देन ही नो, फिर वो चेक करता है कि फ्लैग मेरा 0 है कि 1 है। अगर फ्लैग 0 है इसका मतलब है कि प्राइम था, इसलिए वो प्रिंट कर देता है कि ये नंबर प्राइम था, क्योंकि मैंने कहीं इसको 1 सेट नहीं किया, मैंने फ्लैग को शुरू में 0 किया था, इसको इनिशियलाइज किया था। और ये उसी सूरत में 1 होगा अगर कोई नंबर मिलेगा जो कि पूरा डिवाइड कर रहा होगा। So now I have kind of constructed something and it's a bit convoluted, but it kind of makes sense कि मैं सारे नंबर से डिवाइड करके देखूंगा। सो अगर मैं 99 एंटर करता हूं, so 99 I know is divisible by 3, it's divisible by 9, it's divisible by 11, so it should not be a prime. So वो 2 से सबसे पहले 2 से डिवाइड करेगा, it's not divisible by 2, रिमाइंडर 1 आता है। फिर 3 करेगा, वो कहेगा yeah, it's divisible by 3. Then it'll do 4, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9. It'll go all the way up to 99, हर नंबर से डिवाइड करके देखेगा और जहां रिमाइंडर 0 आ जाएगा वो कहेगा दिस इज नॉट अ प्राइम। सो देखें उसने क्या किया, पहले 3 से किया, फिर 9 से, फिर 11 से, फिर 33 से, एंड इट्स इवनली डिवाइडेड बाय ऑल 4 ऑफ these, therefore it is not a prime. No, Hassan, ये जो, yes, this has become very complex, so I'm going to stop at this point. There's nothing new. I'm just going to repeat this, and लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि सबसे पहले हमने इस चीज पे एग्री करना है। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, दैट्स व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, बट देयर इज नथिंग न्यू beyond this point. If you understand this and if you want to leave, that's fine, but I'm just going to repeat this logic over and over again till there are no questions or you guys are tired. Okay, हमने पहली चीज ये की, डेफिनेशन ये है, प्राइम नंबर इज ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, नो अदर नंबर. So one way to check if a number is prime is to check all numbers, divide n by that number, and if the remainder is 0, that's a problem because this is not a prime then. So हमने क्या किया, पहली चीज हमने लिखी, let's write a loop that goes from 2
all the way to that number. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ. So ये सबसे पहली चीज हमने ये की कि हमने एक लूप लिखा that's going to go from 2 all the way up to number. और वो हम लूप चला के देख लेते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं. So ये मेरा लूप जो है 2 से लेके उस नंबर तक प्रिंट कर देगा. So let's say I enter 17, it should actually go 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So मेरा लूप तो सही बन गया है. Now I have to take each of these numbers and divide 7. So first I need to divide 17 by 2 to see कि remainder 0 है कि नहीं. अगर remainder 0 है then it's not a prime. फिर 3 से divide करूंगा, फिर 4 से करूंगा, फिर 5 से करूंगा, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, all the way up to 16. So that's what I'm doing. Okay, I'm essentially inside this loop. How do I divide and get the remainder? So I say if number remainder I equal to 0, when will this be true? This will be true if I, ठीक है, ये बात समझ आ गई. इस पे तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना. This condition will only be true if I completely divides number. 4 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. लेकिन 4 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1. इसका मतलब है कि पूरा डिवाइड नहीं करता. It's not perfectly divisible. So if the remainder is 0, this tells me that this is not a prime. So ठीक है. And that's all we are doing. We are trying all possible numbers to see कि every time we find a number that जिसका remainder 0 आता है, we are going to say this is not a prime, this is not a prime, this is not a prime. ठीक है. And let's try this. So let's try 15. अच्छा 15 मुझे पता है 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है. Therefore it should not be. So now let's see. So अगर मैं अपना आउटपुट देखूं, उसने 2 प्रिंट किया, फिर 3 प्रिंट किया, उसने कहा this is not a prime because it's divisible by 3. फिर 4 ट्राई किया, 4 नहीं होता. 5 किया, उसने कहा yes, it's not a prime because it's divisible by 5, and 6 and 7 and 8 and 9 and 10. It did all of that. लेकिन हर दफा क्या किया उसने? हर दफा ये चेक किया कि मैंने उसने अपने नंबर को प्रिंट किया और चेक किया कि whether or not this is divisible by that number or not. तो ये मैंने लूप में प्रिंट कर दिया. जब कोई उसको ऐसा नंबर मिला आए कि नंबर को उस नंबर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 आता है, वो कहेगा this is not a prime because I found something that divides you completely. और वो उसको प्रिंट कर देगा. So this is all there is to the code when we are trying to find a prime number. यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड. नो रेज ऑफ हैंड्स. सबको समझ आ गई? Okay. The next thing that we did was a bit of a trick. Okay, rather than printing right here, I'm going to say, let's set a flag. Let's give it a value of 0. Okay? So when you find a number that equally divides, rather than printing it, just say flag is equal to 1. सही, आपका प्रोग्राम चल जाएगा. लेकिन if it found any number that divided the number completely, flag की वैल्यू 1 होगी. Otherwise, if there is no such number, flag की वैल्यू क्या होगी? 0. क्योंकि if no such number exists, flag will always be 0. Flag कहां सेट हो रहा है? When you find a number जिसकी जो पूरा पूरा उसको डिवाइड करता है. So this is just a neat trick that I'm doing. Rather than printing here, I'm just setting a flag. एक इंटीजर की वैल्यू मैंने 1 कर दिया. ये 1 तभी होगी अगर मुझे कोई ऐसा नंबर मिल गया जो
डिवाइड करता है। अगर मुझे कोई ऐसा नंबर ना मिला, इसका मतलब है कि flag is 0, which means कि if flag is 0, this number is a prime because I could not find any such number. ये बात समझ आई है या इसको रिपीट किया जाए? जी तैमूर। Sir, we can use this like variable flag as a Boolean condition, right? Just go 0, 1, just है वो interpret हो जाएगा as a true and false. Exactly. So now I say, exactly, that's a good point. So now I say if flag equal to 1, say out, this is not a prime. Else this is a prime. So now I have my Boolean condition to see. No, so, sir, if we wrote directly if flag as opposed to doing an equal to thing, would That's absolutely fine. That is absolutely fine. So if I say 7, this is a prime because flag will evaluate as either true or false. 1 is true, 0 is false. So आपने उसको equal to 1 करना है या खाली equal करना है, दोनों सूरतें is the same thing. Fantastic, thank you. नहीं, Hassan, if 1 would always be true, so that would not be the right. The number is not always prime, right? So the number is only prime if you found it, if the code never got to line 61. Only then the number is prime, right? We agree on that, Hassan? Yes. So if the code never got to line 61, इसका मतलब है flag was never set to 1. So मैं कहूँगा if the flag was never set to 1, then this is a prime, otherwise it's not a prime. तो खाली आपने वो फ्लैग लिखा था उसमें if में, तो वो मैं कंफ्यूज था कि वो क्या था। Flag की वैल्यू 1 है, ठीक है, या 0 है। जी। So अब if flag इसको वो boolean के तौर पे ट्रीट करेगा कि अगर 1 है तो कहेगा not a prime, अगर 0 है तो कहेगा it is a prime. You remember, each of these variables are evaluated as true or false. 1 is considered true, 0 is considered false. But this is easier. Convention is the same thing. That's exactly what we are checking. ठीक है ना, तो आपने जिस तरह का फ्लैग खाली लिखा था तो उसका मतलब है और if false जो खाली फ्लैग लिखा था if yeah, इसका मतलब है कि if flag is 1, do this, otherwise do this. ठीक होगा। ठीक है, so ये equal ही है. Any questions up to this point? What I will do is I will make this code available and see if you guys can go over this, and if there are any questions, ask the TA or ask me or attend Friday's class. Either way is fine. But the idea is that we are getting a number between 1 and 10, and we are, so I'm going to copy paste this code and I'm going to upload this as well. If you guys want to sort of try this, copy paste नहीं हो रहा, I'm just going to save this and upload it on